Again to Rendezvous, I'm Nabish and this is your channel Prag News. Well, tonight my guest on Rendezvous is someone different and someone special, Sarangi player, in fact acclaimed Sarangi player, Ustad Kamal Sabri. It's Sarangi technology. Look at the guys that we are watching channel with it. We are talking reality, not making psychology, Scientology. Do you want to hear my philosophy? It's Sarangi technology. Hello and welcome to Rendezvous, sir. Hi, how are you doing? I'm doing good, and how about you? How have you been? Very well. It's been amazing, since this last night I came here with my musician, tabla player, Refugee. Okay. It's been great here. So tell me something, what brings you to Guwahati? Well, I was offered a concert here by this organization called Madhuvanti and this person called Sangeeta Chaumwa. She organized this concert for me, and by the grace of God, all went well, and we came here. All right. So, so what are your expectations? How do you see this? The cultural genre or the cultural ambiance? I have heard so much about Guwahati that it's a very cultural city and people love music here. I don't know about classical music, but I'm sure they do appreciate and love classical Indian music as well. They do. So, and probably that's going to be their first live Sarangi concert. So I'm quite positive about it that they're going to love it. Sarangi. An instrument that has actually got, it's so heavenly and so ethereal, yet there was a time when it was about to extinct. So, आपसे जानना चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा. Well, I tried my level best, to bring it to the masses, to make it easier to understand, because people have so much in their mind about Sarangi that it's one of the most difficult instruments, and it's really difficult to understand, really difficult to master. तो उसके लिए मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा करूं कि आम इंसान सारंगी को एंजॉय कर सके और आम इंसान सारंगी म्यूज़िक को एक प्रेरणा के तौर पे ले सके और इंस्पिरेशन ले सके. तो उसके लिए मैंने एक एल्बम की डांस ऑफ द डेजर्ट, उसके बाद एक एल्बम की सारंगी फंक, which I always try to bring the unknown characteristics of sarangi playing and make it easier and to make it energetic music with world music. So I can't resist to hear a wonderful, tune or a wonderful music. I play a, sound for you.
Lovely. Thank you so much. Well, you are one of the offspring of the king or samrat of Sarangi, isn't it? So मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगा आपके पिताजी के बारे में. Well, my father absolutely is a king. I'm just, his servant, I would say. I've been learning from him. He's Samrat of Sarangi as well. It's been amazing to have been born in a family where Sarangi had been played from last 7 generation, and I'm the 7th generation who's been serving Sarangi. And he has taken the Sarangi to the West and introduced it to the American audiences and European audiences and Chinese audiences. He's the first Sarangi player who played in these countries first, and then he was the first Sarangi player he was one of the musicians who performed at the 1947 when India got independence. So he played Vande Mataram on Sarangi. So being born in a family of Sarangi players is a great responsibility as well as a great honor and privilege, so that you could learn Sarangi from a maestro like him. So I learned from the age of 5. I took lessons of traditional talim probably, and then I went to London, England for a tour with him, and we performed a lot of concerts in Europe, and then I decided to stay there for some time and then came back to India, learned properly with my father, and then toured India with where it's never been performed. So my aim to perform Sarangi is, to play and to make people aware about the music of Sarangi and get them interested and make Sarangi music as easier so that they can enjoy it. All right, and you are among those 7th generation, right? Yes, who's professing this. If I won't be wrong, if I say the religion of playing Sarangi, isn't it? Yeah, absolutely. So I'm sorry, I'm trying to be selfish, or in fact, I'm very selfish. I want to hear another track from you. Yeah, no problem. ये मैंने गुवाहाटी का folk song सुना था, and I got really attached to this song. I really love it. It's in fact very lovable to hear from you and to listen from you. In fact, our Assamese viewer have immediately got to know what exactly you were playing. So, Ustad ji se aapne not only Sarangi playing, you must have learned many nitty-gritties and the nuances, isn't it? Yeah. Those you of course cherish those, but one such memorable thing you'd still cherish from your father. Well, being the son of a great legend, great Sarangi maestro, is not an easy task itself, because आप जब बजाते हैं तो लोगों की expectations भी ज़्यादा होती हैं कि आप तो उसको expectations के ऊपर आपको according to their expectations you are playing. That's where people think that you have achieved something. So I always pray to God that I could fulfill the responsibilities I have been given by my family, to be able to perform Sarangi well and to give the message of love and peace by my music. It's very important. तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरे संगीत में इतनी सच्चाई हो कि लोग उससे प्रेरित हों और अच्छा रास्ता अपना सकें और सारंगी को एंजॉय कर सकें. तो यही जब मैं पहली बार जब मैंने सारंगी हाथ में ली तो I got really frightened because I had a very small sarangi. And सारंगी अगर ट्यून में नहीं और आप उसको बजाने की कोशिश कर रहे हैं, so it makes the most horrible sound. Okay. तो मैं जब छोटा था तो पहला लेसन ले रहा था पापा से अपने, तो मैं साउंड से इतना घबरा गया कि मैंने कहा इसमें तो अजीब सी साउंड आ रही है, तो मैं डर के कमरे से भाग गया. तो मुझे वापस बुलाया, फिर पापा ने उसको प्रॉपर्ली ट्यून किया, then he gave it to me. So it was the most memorable incidents I had. Okay, that was the time when you played it horribly, I guess. Yeah.
All right. On that note, we are slipping into a short commercial break, isn't it? So viewers, I'm sending you to a short commercial break. Stay tuned. Prag Cine Award, Northeast biggest cine extravaganza. Heartthrob Zubin Garg. Prag Cine Awards. তাত ময়ো থাকিম আপোনালোকৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ Singing sensation Debojit Shaha and I'll be performing for Prag Cine Award. We'll catch you there. at GMCH Auditorium, Bhangagar on April 12th. Prag, Zindabad. Come, be a part of the revolution. Prag Cine Awards. তাত ময়ো থাকিম আপোনালোকৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ And I'll be performing for Prag Cine Award. We'll catch you there. Prag, Zindabad. Welcome back after the break, and it feels a great delight to sit beside Sarangi Maestro, Ustad Kamal Sabri. Well, it's nice to have you here. So tell me, this is your first visit, isn't it? Yeah, Guwahati right, mein. absolutely. Northeast में पहले आप कहीं पे travel कर चुके I have हैं? come to Imphal and also Tripura. जी. Yeah, जो Guwahati, but I've never had an opportunity to come to Guwahati to perform solo sarangi. But since we were before the break, we did mention कि सारंगी an instrument, a lovely instrument which was about to extinct. हम लोग बात कर रहे थे तो do you think you are burdened with this responsibility? I wouldn't say burdened, but then you are given Well, this I've been given this responsibility. responsibility, and I think God has decided that I should be taking it forward and making it, to perform in every part of different parts of the world. तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैसेज अच्छा जाए और सारंगी के प्रति लोगों के अंदर एक अलग सा शौक़ पैदा हो और मोहब्बत पैदा हो. तो सारंगी जो एक पुराने वक्त में इसका नाम था सौरंगी. सौरंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें से आप भिन्न प्रकार का संगीत निकाल सकें, मुख्तलिफ अंदाज का म्यूज़िक मौसीक़ी निकाल सकें. तो जैसे धुरपद है, ख़याल है, ठुमरी है, कजरी है, चैती, टप्पा, तराना, फोक सॉन्ग्स, गज़ल, भजन, ये सारी चीज़ें सारंगी पे बजना मुमकिन है. और सारंगी में 3 मेन गट स्ट्रिंग होते हैं जिस पे हम बजाते हैं. जैसे पहला तार ये है, और दूसरा, तीसरा ये, और ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये बजाने के लिए नहीं, रेजोनेंस के लिए होते हैं. और ये पार्ट जो सारंगी का है, ये साउंड बॉक्स है जो कवर होता है गोट स्किन से. और ये बो या गज़ इसको बोलते हैं, जिसको सारंगी पे अगर आप तार पे गज़ को फेरेंगे तो सारंगी में से आवाज़ निकलेगी. But if you want to produce the specific note of the melody, then you need these 3 finger nails, जहाँ से हम बजाते हैं. और इनको आप जब साइडवेज से पुश करते हैं स्ट्रिंग्स को, अक्सर आप इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे कि वायलिन को नीचे की ओर टिप से बजाते हैं और सितार को भी नीचे की तरफ बजाते हैं, गिटार को भी. लेकिन सारंगी एक यूनिक ऐसा वाद्य यंत्र है जो नाखून के ऊपरी से, जिसको क्यूटिकल्स अंग्रेज़ी में कहा जाता है, तो यहाँ से बजता है. और इसको बजाने के लिए आप उंगली को नेक्स्ट टू द स्ट्रिंग्स रखते हैं.
तो इस तरह से इसको बजाने का अंदाज है। तो उस्ताद जी आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक यंगर जनरेशन को, नौजवानों को इस वाद्य यंत्र पर आकर्षित करने के लिए आपको क्या संदेश या मैसेज या पैगाम यही है कि आने वाली जनरेशन, बेशक आप गिटार सीखें, आप ड्रम सीखें, लेकिन उसके साथ साथ आपको चाहिए कि अपने रूट से भी जुड़े रहें और अपने संगीत को ना भूलें। ये हमारे सारंगी को माना जाता है कि ये इंसानी आवाज़ के सबसे ज़्यादा अगर नज़दीकी सांस कोई है तो वो सारंगी है। और भी वाद्य यंत्र उनको सुने और इन्जॉय करें, आनंद लें उन वाद्य यंत्र का भी, और हमारे शास्त्रीय संगीत से हमेशा जुड़े रहें। ओके, सो उनको तो ये मैसेज दिया गया, तो उनको आकर्षित करने के लिए आप कौन सा ट्यून बजाएंगे? मैं उनको आकर्षित करने के लिए एक धुन सुना रहा हूँ जी। ब्रेक से पहले आपने कहा था कि यू हैव ट्राइड टू रीडिफाइन एंड यू हैव ट्राइड टू मेक इट introduce the inaccessible or the unknown characteristics of sarangi. What are those unknown characteristics जो आप बोल रहे थे? एक ऐसा जो जैसे सारंगी को बहुत ज़्यादा डांस की म्यूज़िक में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो मैंने उसको अलग अलग जो एक एल्बम की थी, डांस ऑफ द डेजर्ट, जिसमें मैंने एक जर्नी दिखाई थी, इंडियन डेजर्ट टू द डेजर्ट ऑफ द मिडल ईस्ट। सो हाउ द म्यूज़िक चेंजेस बिटवीन टू डिफरेंट डेजर्ट्स एंड क्या उनको लिंक करता है आपस में म्यूज़िक के ज़रिए से। उसके बाद मैंने एक एल्बम की सारंगी फंक, जिसमें मैंने डिफरेंट अंदाज का फंक सारंगी के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। उसमें मैंने एक ब्लूज़ के स्केल से सारंगी का ट्रैक बनाया था जिसका नाम था जैज़ी रंगी। और एक टेक्नोलॉजी जो ड्रम एंड बेस की टेक्नोलॉजी के साथ एक ट्रैक था, उसका नाम था सारंगी टेक्नोलॉजी। और तबला के साथ कैसे फंक करते हैं, देन आई कंपोज्ड अ ट्रैक कॉल्ड 7 अगेन। और अभी जो मैंने लेटेस्ट एल्बम की है उसका नाम है सारंगी रीडिफाइन। तो आजकल जो डब स्टेप म्यूज़िक है उसमें मैंने 2-3 ट्रैक्स उसके साथ सारंगी के साथ किए हैं। तो लेटेस्ट ट्रेडिशन, जो पुराना ट्रेडिशन है उसको लेटेस्ट आप टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसकी जो ट्रेडिशनल क्वालिटीज़ है उसको मेंटेन रखते हुए उसको मर्ज करना है। तो ये मैंने सोच के सारंगी रीडिफाइन करके एक एल्बम की। इसकी ख़ासियत ये है कि पहली बार इसमें क्योंकि मैं एक एकेडमी चलाता हूँ तिहाड़ जेल में भी, तो आई टीच फ्री टू द इनमेट्स। तो मैंने कुछ इनमेट्स को उसमें सारंगी रीडिफाइंड एल्बम में अपने साथ उसमें परफॉर्म कराया। तो बहुत अच्छा ये एल्बम है और मैं चाहूँगा आप उसे सुने कभी। ज़रूर ज़रूर। तो तिहाड़ के जो इनमेट्स के साथ ये प्ले करना आपका, वो how did it happen actually? Well, I have a friend who had already been running an academy there, so he kind of offered me that if I could do a classical music academy there. I got scared that whether people there, inmates, would love it or not. Initially I was really hesitant to go and start an academy of music there, but slowly and gradually they started liking it. They wanted me to because क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जो आपको एकाग्रता दे सकता है, एक सकारात्मक सोच दे सकता है, एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। तो मैंने उसके ज़रिए से एक ऐसी मैंने कोशिश की कि लोगों को एक अच्छी सोच दे सकूं, पॉजिटिव एनर्जी दे सकूं और पॉजिटिव सराउंडिंग दे सकूं। तो वो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ही मुमकिन था और
उनको भगवान की ओर आकर्षित कर सकें। Dance of the Deserts, that's an album. उसके उनके when did it got released? 2006 में इसको रिलीज़ किया था और ये पहली एल्बम थी जिसमें सारंगी का एक नया रूप दुनिया को सुनने को मिला था, जिसमें मैंने 5 सारंगी के साथ काम किया था और 5 सारंगी प्लेयर्स को ऐसे इस्तेमाल किया था कि जो हमारे भारत का रेगिस्तान एरिया है, राजस्थान एरिया है, उसमें जो संगीत है और मिडिल ईस्ट का जो डेजर्ट है उसका जो संगीत है, उसमें कोशिश ये थी कि एक ऐसी यूनिटी देखी जाए और म्यूज़िक के ज़रिए से उसको लिंक किया जाए। Alright. So that has been an effort of music of the desert. And nominated to It the was, Grammy. it was, yes, India's submission in 2006. It was submitted for the Grammy, that's right. All right. So how did it feel like when it got nominated and it was sent to the Grammy? It was just great. It's been a great honor. It was not a category where Sarangi would categorize as a world music instrument, but through that my effort, Sarangi was categorized in the category of world music instrument. So it's a great honor and great achievement for Sarangi, that Sarangi को दुनिया में एक वर्ल्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का दर्जा मिला। जी जी। सो डांस ऑफ द डेजर्ट से उस्ताद जी एक मैं डांस ऑफ द डेजर्ट का ट्रैक आपको सुनाता हूँ। लवली लवली लवली, थैंक यू सो मच। वेल अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा जो you also teach abroad as well, isn't it? You attend workshops, you do concerts outside, be it Canada, be it Norway, or be it in different parts of the globe. So what have you learned from them, those eager aspirants or those people? Well, the most important thing what I learned, because when you go to different country, you think that you come from a great family of musicians, you come from a great heritage of music. But when you go abroad and see other people, like people from Africa, they have same lineage, they have same tradition. तो उनसे सीखने को मिला कि whether even if you come, but be nice and be humble and be find a meeting point where two of the great musicians come together and make good music for the people. लेकिन जब आप इंडिया में म्यूज़िक करते हैं तो उसकी सेंस ये होती है कि आप अपने घराने को दर्शा रहे हैं, आप अपने फैमिली ऑफ लीनिएज को दर्शा रहे हैं। जब आप उनके साथ आप म्यूज़िक करते हैं तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा मीटिंग पॉइंट सोचा जाए, कुछ ऐसी संगीत सोचा जाए जो हम साथ मिलके ऐसा प्लेजरेबल म्यूज़िक बना सकें जो आम इंसान को अच्छा कानों में लगे और अच्छा मैसेज दे सकें। तो और उनसे ये भी कि जो उनका जो अंदाज़ है वेस्टर्न म्यूज़िक का, जब वो 100 ऑफ वायलिन प्लेयर्स बैठे होते हैं और एक साथ बैठ के उनकी बो मूवमेंट, उनकी फिंगरिंग सब एक साथ होती है और वो कोई भी चीज़ को जब संगीत के ज़रिए से पेश करते हैं तो उसमें कितनी यूनिसन होता है, एक यूनिटी होती है। तो हमारा जो संगीत है वो एक ऐसा संगीत है जो एक अकेला आदमी बैठ के बजा रहा है और वो उसकी मुश्किलात, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खूबियाँ अलग हैं, और एक 100 आदमी बैठ के एक म्यूज़िक को बजा रहे हैं, उसकी अच्छाई, उसकी मुश्किलात, उसकी खूबियाँ अलग हैं। तो दोनों चीज़ों को एंजॉय करता हूँ मैं और दोनों चीज़ों को करने की
समझने की कोशिश करता हूँ. But how do you think जो interchange और या फिर exchange of learning instruments has happened? जैसे कि यहाँ के youngsters they perform, they learn and they do play musical instruments which are not basically indigenous और इंडिया से नहीं है. On the contrary, सारंगी of course बाहर के बहुत सारे students या फिर बहुत सारे players want to play it, isn't it? So is it a good thing? Is it a good approach? Why not? You know, it's not a bad approach at all. But considering it, you should also, you know, if you want to learn sarangi, you come from America, but जो अमेरिकन आदमी आपसे सारंगी सीख रहा है उसको पहले से वेस्टर्न म्यूज़िक की भी नॉलेज है. हमारे यहाँ जो बच्चे अगर गिटार सीखना चाह रहे हैं तो शायद उनको क्लासिकल म्यूज़िक की नॉलेज नहीं होती, जानते नहीं होंगे. तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने संगीत की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद आप डिसाइड, लेट योर हार्ट डिसाइड what you want. Yeah, exactly. All right. So your heart always wanted to. Not really. Initially, I always wanted to be a film star or a cricketer. Okay. Like any child in India. But since my father, you know, gave me this instrument, and many people came my home, they said, you know, Ustad, one of your sons should learn sarangi. So luckily, I was the lucky one who was chosen for this responsibility. And मैं शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे इतना बचपन से मैं अच्छी सारंगी बजा रहा था तो लोग इतना मुझे लाइक कर रहे हैं और मैंने दूरदर्शन टेलीविज़न पे छोटी उम्र में बजाया. वहाँ से मैं चाइल्ड प्रोडिजी के कॉन्सर्ट में बहुत अच्छा बजाया तो फ़ोन कॉल्स आने लगे. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड, यू नो, रादर बी अ सारंगी प्लेयर. So आज अगर आपको ऑफर मिले फिल्म स्टार, क्रिकेटर या फिर बीइंग अ सारंगी मास्टर, तो मेरे ख्याल है मैं नहीं बन सकता वो तो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे मैंने छोड़ दिया है. लेकिन हाँ, if I given an opportunity to perform in film, you know, so I would love to do that. All right, that's as honest and as curt as Ustad ji can be. Thank you so much for giving your precious time. So how did it feel like coming to Maestro Rendevous? Fantastic. You know, it's been great honor and an opportunity to present my feeling and myself and my music to the Guwahati audience. And before we wind up, finally, just for Rendevous. Yes, no problem. Thank you so much. So viewers, that's it. Now if you have any feedback or suggestions, write into us at our address. That's Rendevous, care of Prag Entertainment Network, 5th floor, Suriatar B. Boro Road, Ulubari, Guwahati 7. You can also call us at our landline number, that's 0361 2465 325. Thanks for watching, and for more news and update, keep watching Prag News.